class. Now, everyone, see very carefully the person who are putting the annotations. That is not good. Anshika Kasodan. This is not good, you know. That is very bad thing. I'm getting all the names. Okay. So I will be uploading the content on YouTube as well for your future references, right? Like previous class, I have uploaded on the YouTube, right? In the same way, I will be uploading. Now, so far, what we have discussed, just try to understand. So far, we have discussed the cause of the motion was the force, and it is the force which can change the state of an object, which can change the direction of motion of an object, which can change the shape and size of an object, right? These are the things that we have discussed. Now the question arises that what are the different kind of forces? Are there different kind of forces we are having? So we will be discussing those things today, right? So yes, we are having two type of forces, right? Number one, that is called as balanced forces. Number two, that is called as unbalanced forces, right? Balanced forces and unbalanced forces. So what are the balanced forces and unbalanced forces? Simply, the forces which are equal in magnitude and opposite in direction acting on the same body. That is called as the balanced force. For example, we are having this situation. A body is there, and on this body, multiple forces are acting in random directions, right? Suppose this is 20 Newton of force, this is 10 Newton of force, and this is 30 Newton of force. Now, what is happening here? If I say, so the forces are acting in random direction. In this direction, we are having 30 Newton of force on body, and the net force in this direction is 20 plus 10, that is again 30 Newton of force. That means the body is having two equal and opposite forces, 30 Newton, and this is again 30 Newton. They will be cancelled out. And if I say, so the net force, that is zero, which is generally called as resultant. So if the resultant force is zero, for a condition where we are having multiple forces acting on a body, means multiple forces are acting on a body in different direction, but whenever we are going to calculate the resultant, the net force, and we get that net force as zero, so that is called as balanced force. Okay. Anshika Kasaudan, sir, voice is not clear. How many of you are having this problem of voice? वॉइस को लेके कितने लोग को प्रॉब्लम आ रही है? बाकी सबको वॉइस क्लियर आ रही है? अंशिका ने रेज किया। अंशिका आपके एंड पे देखते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम वॉइस की? आउट ऑफ 41। सुरेश पांडे सर, वॉइस इज क्लियर। कितना लोग को वॉइस क्लियर आ रही है पहले ये बता दो मुझे जल्दी से। ओके गार्गी, नो प्रॉब्लम, voice is clear. See, those who are facing the voice problem, so might be their internet is not stable, because a lot of students are telling me that the voice is very much clear, right? So better don't panic. This is totally about the internet speed, what you are getting at your device. So please try to rejoin, or just make sure that the internet is stable. So these things you have to do, right? And in the worst case, what we are having? We are having the things like this will be available on the YouTube as well for your future reference. So you can use that particular from there, right? Okay.
Okay. So again, coming to this balanced forces and unbalanced forces. So as I told you, the balanced forces are the forces which are basically equal in magnitude and opposite in nature, right? That is called balanced forces. Okay. Secondly, we are having the unbalanced force. See, I will be coming to the simulation part as well. But before that, let's do now. They do not change the state of an object. Always remember the balance force does not, change the state of an object. For example, I say, mm, okay, I'm having this pen in my hand, right? I'm applying the force from both sides. So the pen is not moving in any one direction, right? It was in rest and still it is in the rest. So balance forces are not going to change the state. Like in the figure, you can see a book is kept on a table and this book is stationary, right? But can anyone tell me how many forces are acting over here? Who can tell me that some forces are acting on this table and on this book? What are they? Anyone can let me know the forces that is acting on this body? No idea? Okay, frictional force, Devesh, gravity and friction, gravitation, friction and force, we apply, very good. But my dear kids, please tell me when the friction will be working. Friction will be working when the body is in motion, right? So we are not applying any force, Ritika. Arisha, how the friction will be there? See, in this case, only two forces are acting. Number one of you have told me that is the gravitational force, and second, the reaction, the normal force, right? This one. The gravitational force means the weight of the book that is acting on a table. That is a gravitational force. And against that gravitational force, the table is applying a upthrust force on the book, and that is called the reaction force, right? So basically, there are two forces which are equal in magnitude and opposite in direction. So the net force on the book is zero, and that is the reason why the book is not moving in any direction, right? Because these forces are equal and opposite in nature, equal in magnitude, right? If 10 Newton is the weight of the book, so the 10 Newton is the reaction that we are getting on the book by the table. So they are nullifying their effect. That's why the book is at stationary. Is it clear to everyone? Let me tell you, this is very much clear to everyone. I want your responses, your active participation, my dear. About 42, 43 students are there, and the messages I'm getting only from one, two. So please, active participation is very important to all of us. Two, as you know now, this is what we are talking about. In this chapter, we will be discussing about a Newton third law of motion that says for equal and opposite reaction, right? Every action has an equal and opposite reaction. So I will feel energized. I will be explaining the thing with a more efficiency, with a lot of happiness. Once I will be getting the reward back, once I will be getting the responses from you. So please do not make like conjusi in sending the messages, right? Aya, me, aya, whatever the things are. Please, everyone, please put your efforts. Please give the messages, okay? Now, I'm putting this balance forces concept in the real life as a simulation part. Just give me a second. Huh? See, this is very much clear. इनफैक्ट ये हमने लास्ट टाइम पे भी किया हुआ था बट समझते हैं इसको थोड़ा सा भी हम और यहाँ पर काफी चीजें हमें मिलेंगी
Wait a moment, please. बेटा लोग बस 1 मिनट का समय दीजिए। Okay, so I think this screen is very much clear to everyone what I'm sharing on the screen. So let's see about the balance force and the non-balance force, या unbalanced force, right? Non-balance is not proper correct. It's an unbalanced force. तो हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ नाम लेते हैं और नाम के थ्रू चलते हैं। जैसे मान लो ये नीला वाला एक हमने यहाँ से लगाया, पहले हम यहाँ ना कुछ पैरामीटर सेट कर देते हैं। हमें सम ऑफ द फोर्सेस भी दिखेगा, हमें वैल्यूज भी दिखेंगे और हमें स्पीड भी दिखेगा, राइट? देखो स्पीड मीटर लग गया। अब अपन ने क्या किया, एक बंदे को यहाँ से उठाया हमने, ये हो गया अभिनव गुप्ता, राइट? अब अभिनव गुप्ता कितना फोर्स लगा रहे हैं भाई? अभिनव गुप्ता लगा रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स। अच्छा देखो आप यहाँ पर, प्लीज लुक दिस वेरी केयरफुली। In the left direction, Abhinav is applying 100 Newton of force. In the right direction, no one is there, right? So these bodies, whatever we have taken, they are having the random values. Like suppose I shift Abhinav here, I put Aradhya Mishra over here. So it is a of 50 Newton. So in this situation, what would happen? कौन मुझे बताएगा इस सिचुएशन में ये जो ट्रॉली है, अगर मैं इसको सिमुलेट करूं, गो पे क्लिक करूं, तो ये ट्रॉली किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए आप सभी। In this situation, if I put cursor on go, if I click go, so what will happen to the trolley? Yes, yes, that's wonderful. Everyone, please go do this. Okay, this will go to the left, right? Now, suppose I have connected over here. Always remember, now the left force is 50 Newton, right force is 50 Newton, sum of forces is 0. Now, in this situation, where the trolley will move? It's a balanced rest. That's correct. Now, if I put go, see, both of the persons are pulling that trolley in their side, but the trolley does not move. Why? Because this is a situation of balanced force. Now, pausing this one, I have connected one person more here, and here I'm putting that is this one. Now, go. So now what is happening? In the right direction, there are two persons applying 50 Newton force. The total force is being 100 Newton. And in one direction, in the left direction, a Khali is there who is applying 100 Newton of force individually. So the trolley is not moving. But at the same time, suppose I put a person over here. Now what happens? The trolley has been started to move in the left, but at the same time, I have connected a person over here. So the trolley moves in the left, right direction, right? It should be equal. I think some problem is there. Wait a moment. Yes. Now, what is happening? They are moving to this side, right? Pause. And suppose I have applied a person over here. Now go. See what is happening? It is moving in opposite direction again, right? Suppose I have put one person over here. Now it will be slowing down, but before that, it is approaching to that last point. No. Now it is going to see what is happening over here. Now, since why this is happening, why the body is moving, you know, because if the balance force is there and the body is, in the motion,
so the body will stay in the motion, right? So you are getting that particular thing continuously. Okay, so that is the thing that we have seen. ये सारी चीजें क्लियर होगी सभी को? किसी को ना क्लियर हो तो बता दो मुझे. What is the balance force? What is the unbalanced force? Everyone, it is clear. Very good. Only 14-15 messages are there out of 46 students. This is not correct. Messages should be there, right? Please share more and more message. इसका मतलब कुछ लोग सो रहे हैं, क्लास लगाकर बैठ गए सोने. This is not correct. Please turn on the camera. Actively participate in the class. What is the going on, right? Okay. Now, coming to this balance force. Now here, the forces which are unequal in magnitude and acting on the same body, right? So always remember, whenever we are having the unequal forces, that means unbalanced forces are acting on a body, so they will cause the body in motion. They will cause the body in motion. That means now the body will be moving. As I told you, right, earlier, that now the body will be moving in a certain direction where the force is maximum, right? So I am sharing this data, that balance force and unbalanced force, along with the class in the group so that you can prepare your notes as well, right? Meanwhile, see, the unbalanced force causes the acceleration. Acceleration means the change in velocity per unit time. They will cause the change in velocity per unit time. Okay. If the unbalanced force is there, so the body is to keep moving with certain velocity, and the rate of velocity will be changing. The velocity will be changing. If the velocity is going to change, that means there is the acceleration or retardation, depending upon whether the body is increasing its final speed or it is going to decrease the final speed, right? Now, coming to next one. The new topic that we are having here is inertia. What is inertia? Just try to understand. First of all, let's define the term. Inertia is a natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. What do you mean by this one? Can anyone tell me what is meant by this? देखो, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं inertia के concept. I'm putting an example in front of you and just tell me what will happen in that one. ठीक है? विंटर का सीजन है, संडे का टाइम है. नॉर्मल डेज में जब आपके स्कूल होते हैं, आप 6 बजे उठ जाते हो बिस्तर से क्योंकि आपको स्कूल आना है. संडे का टाइम है, छुट्टी है, विंटर वेकेशन चल रही है. आप में से कितने लोग ऐसे हो जो स्वयं से रजाई के बाहर आ जाओगे 6 बजे? रितिका, इसलिए बैलेंस फोर्स होने के बाद भी बॉडी मूव क्यों कर रही? क्योंकि बॉडी का स्टेट क्या था? मोशन था. तो बॉडी मोशन को मेंटेन कर रही है. ठीक है, ये अभी हम फर्स्ट लॉ में समझेंगे उस चीज को. ओके, चलो ध्यान से समझिएगा. ऐसा कितने लोग हो जो जाड़े में, हाँ वो अभी हम बात करेंगे, अभी हम लॉ पे नहीं चल रहे हैं, अभी हम सिंपल सी बात करते हैं. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर लाइक दिस
that on Sundays of the winter, you are not going to leave your bed yourself. ऐसे कितने लोग हैं जो अपना बेड स्वयं छोड़ते नहीं है जाड़े में, उठना नहीं चाहते रजाई के अंदर से? ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे। होता है सभी के साथ? हाँ जी। यस, कई लोग के साथ होगा, जिनके साथ नहीं हो रहा वो झूठ बोल रहे हैं। सबके साथ हो, मेरे साथ भी हो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, नाउ जस्ट साइंस से जोड़ते हैं इसको, हम लिंक करते हैं साइंस के साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या है बेटा, ये इनर्शिया है। ठीक है, रात में अपन रजाई के अंदर घुसे, रजाई बहुत ठंडी थी, लेकिन धीमे धीमे बॉडी टेम्परेचर से रजाई क्या हुई, गर्म हुई। सुबह बिल्कुल रजाई बहुत गर्म है, अब हम रजाई के अंदर से बाहर निकलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी इस बात की इजाजत हमें नहीं देता। वी डोंट वांट टू चेंज आवर स्टेट, दैट कंफर्ट स्टेट, कि हम बाहर निकले और ठंड में करते निकले, राइट? नहीं करते। ये क्या है? ये इनर्शिया है। जब हम किसी भी स्टेट के चेंज को अपोज करें तो दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ये दीक्षा बुक, दैट इज करेक्ट। So everybody has this tendency to oppose, to resist any kind of change in itself. बट मुझे क्या ये बताओ कि ये जो चेंज है, ये जो रेजिस्ट है, ये हमेशा हमारे साथ होता है क्या? हम्म? आप रजाई से निकलना नहीं चाह रहे हो, मानिए आपकी बात, लेकिन क्या अगर बैकग्राउंड से तुम्हारे पेरेंट ने तुमको चिल्ला के चिल्ला, उठो सुबह हो गई, नाल है कहीं का उठा नहीं अभी तक, देन व्हाट विल हैपन? मम्मा झाड़ू लेके पहुंच गई कमरे में, अभी क्या होगा? आप बताओ मुझे, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? when the force is applied more than the tendency of the object. Yes, उठना ही पड़ेगा. Yes, we will be forced to get up. Right. So what is happening? The body has shown its inertia. The body has resisted to that particular change. But when the effective force was there, so the body has to change that state. Right. So this is called inertia, where the inertia is what? As a natural tendency of an object to resist the change in its state of motion or of rest. But always remember, it will be validated only and only till the effective force is not acting on the body. अब इफेक्टिव फोर्स का क्या कंसेप्ट है ये भी जरा समझ लो। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ना, मैं ये कहता हूँ कि मम्मी पापा नहीं आए, मान लो आप रजाई के अंदर हो और आपके यहाँ घर में वो चिंटू है, छोटा सा छोटा भाई तुम्हारा, वो आता है तुम्हें उठाने कि भैया उठो, दीदी उठो। नाउ टेल मी, कितने लोग उठ जाओगे? उस छोटे भाई के कहने पर कितने लोग बिस्तर छोड़ दोगे? हाउ मेनी ऑफ यू विल लीव द बेड ऑन हिज कॉल और हर कॉल कि भैया उठ जाओ? अदनान छोटा भाई नहीं, कोई बात नहीं, अगर मान लो छोटा भाई होता तब क्या उठ जाते? बताओ। Please try to understand the logic here. What is happening here? Chota bhai means the force was on the body, but that force was not effective, right? That force was not effective, right? Right, Diksha, that is correct. तो जैसे तुम्हारे घर में सोफा रखा है, अब तुम सोचो सोफे को तुम उंगली से हिला दो, हिलेगा? नहीं हिलेगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, इनर्शिया तब रिड्यूस किया जा सकता है जब बॉडी पर इफेक्टिव फोर्स लगे जो उसके चेंज ऑफ स्टेट को करने की औकात रखता हो, जो इनर्शिया को रिड्यूस करने की औकात रखता हो। मींस इनर्शिया तो प्रॉपर्टी है रेजिस्ट करने का, राइट? बट whenever we will apply some forces on an object so the body can change its state, but always remember that force will be effective to overcome that inertia, right? Like example this one, ये सामान लेके जा रहे हैं, luggage is tied to the roof to prevent them from falling due to inertia, right? कि अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, पता लगा लगेज सारा आगे की ओर चला गया, राइट? तो ये सिचुएशन हो सकती है। और देखते हैं। Now, how can we relate that particular inertia from the mass? So always remember, inertia is basically
proportional to the mass. The more and more mass is there, so more and more inertia will be there. So mass of an object is the measure of its inertia. अब इस लाइन को जरा हम समझने की कोशिश करें. आप देखो, आपके घर में एक प्लास्टिक की चेयर होगी, राइट? आप प्लास्टिक की चेयर को हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा. लेकिन आप यदि उतना ही फोर्स सोफे पर लगाओ तो क्या सोफा मूव करेगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे. ओके अंशिका, मैं फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी. पहले इस चीज को समझना जो मैं कह रहा हूं. अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूं एक प्लास्टिक के चेयर पर और एक सोफे वाली चेयर पर, तो प्लास्टिक का चेयर तो हिल जाएगा, मूव कर जाएगा, लेकिन सोफा अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोफे का मास ज्यादा है और मास ज्यादा होने के कारण उसका इनर्शिया ज्यादा है, राइट? That is why that sofa will not move, but that plastic chair will be displaced, right? नाउ अब इनर्शिया को कहते क्या है, फिर से समझ लेते हैं. मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ. इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं बेटा जड़त्व. क्या कहते हैं? जड़त्व. जड़त्व शब्द बना होता है जड़ से. जड़ कहाँ पाई जाती है? पेड़ों में पाई जाती है. और जड़ का मेन काम क्या है? अगर हम बायोलॉजी की टर्म में बात ना करें, फिजिक्स के टर्म में बात करें, तो जड़ का काम क्या है? जड़ का काम है चीजों को पकड़ के रखना, पेड़ को पकड़ के रखना, जिससे आंधी चलने के बाद पेड़ उखड़ न जाए, राइट? तो जड़ क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है. किस चीज का रेजिस्ट कर रहा है? होने वाले चेंजेस का रेजिस्ट कर रहा है, राइट? सो यहीं से इनर्शिया को बना लीजिए अपने डेफिनेशन कि इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी which resist any kind of change in the object when the object is going to change its state, right? कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी स्टेट को नहीं बदलना चाहता. मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अपने अपनी स्टेट को नहीं बदलना चाहते, राइट? तो when an object you know is applied with a force, so that object resists to some extent so that the state cannot be changed, and that is basically called as inertia. अभी सबको क्लियर हो गया इनर्शिया के बारे में? जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे, क्योंकि टाइम अपने पास कम है, तो ये इनर्शिया का टॉपिक क्लियर हो जाए एटलीस्ट. Anyone has any problem till this topic what we have done today? Anyone has any issues till this topic? जो आज हमने पढ़ा बैलेंस फोर्स, हमने पढ़ा अनबैलेंस फोर्स, हमने पढ़ा इनर्शिया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? ओके दीक्षा, पहले तो ये वेट अभी हमारा चैप्टर 3 में है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ. बेसिकली वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, राइट? जब ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है तो उस बॉडी का वेट होता है, दैट इज सिंपली द फोर्स दैट कैन बी गिवन एज m into g, mass time acceleration due to gravity, right? That is m into g, that is called weight. And mass क्या? एक प्रॉपर्टी है कि कितना स्पेस वो ऑक्युपाई कर रही है, राइट? Means applied by an opposite to the force is known as inertia. Yes अंशिका, बट अंशिका फिर से यहाँ पे ध्यान देना कि डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द इनर्शिया एंड द फ्रिक्शन. Inertia and the friction, please don't be confused. Inertia and friction are the two different things, right? हाँ, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर इनर्शिया ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, दैट इज थिंग. लेकिन इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, बल्कि फ्रिक्शन एक फोर्स है. इस चीज को ध्यान रखिएगा. There is a relation between the mass and gravity. No, there is no relation between the mass and gravity, Anisha, right? Gravity is offered by the different planet by which they are pulling that object towards their center. That is a gravity. Mass is a universal concept that is not going to change anywhere, right? So पहली बात तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, अभी हम इनर्शिया पे बात कर रहे हैं. मास और ग्रेविटी ये सारे टॉपिक हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर में आएंगे, तब हम वहां पे बात करेंगे, राइट? अभी यहाँ तक के टॉपिक सबको क्लियर हो गए. So what we can conclude here, greater is the mass, so the greater is the inertia. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, राइट? दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर. These are the two materials we are given, a stone and a plastic ball. मुझे जल्दी से जवाब चाहिए यहाँ पे. आप सभी का बच्चों का एक साथ आना चाहिए मैसेज. इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा?
We are having two samples, a stone and a ball. Tell me, इनमें से किसका फ्रिक्शन या किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? Everyone, I'm looking for everyone response. अभी कम लोग क्या है? ओके, तो यहाँ पर जो हमें इनर्शिया देखने को मिल रहा है वो ज्यादा किसका है? स्टोन का है, एज कंपेयर टू द प्लास्टिक बॉल. इज इट? वेरी गुड. यस, both are same size but which needs greater force to bring about the change in state, that is a stone, because stone is having the greater inertia, right? Ball and stone are of the same size, but since the mass of the stone is quite larger than the mass of the ball, that's why it will require more energy. It is having more inertia, so it will require more force to overcome that. Is it? Tell me, everyone, is it clear? तो यहां तक की बातें क्लियर होगी सबको? चलो एक एग्जांपल देखते हैं. When a card is flicked with a finger, the coin placed over it fall down the glass like this one. आज आप ये एक्टिविटी घर पे करना. This activity you have to do at your home. Take a glass, put a card, playing card you can choose, and put a coin over there. अब मुझे बताओ इस एक्टिविटी में अगर हम इस कार्ड को स्ट्राइक करें क्या होगा? What will happen when we will strike that particular card? Yes, tell me, what will happen? Yes, the card will go away, but the coin will be falling in the glass. Is it? Yes. So everyone, you have to do this activity at your home today, right? Just do this activity, shoot a video, and share that video to me, right? इस एक्टिविटी को आप सभी परफॉर्म करेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप मुझे उससे शेयर करेंगे. क्लियर है? तो ये आज की क्लास के लिए था. आई होप चीजों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा. कितने लोगों को समझ में आई आज की बातें जो आज हमने पढ़ा? कितने लोगों को क्लियर हुआ भाई? टेल मी द क्लियर. तो बेटा साथ में नोट्स बनाते चलें. जुलाई फर्स्ट वीक में मैं नोट्स भी चेक करूंगा आपकी. राइट? मजा आ गई? मुझे आ गई. अच्छा, ओके. चलो, मजा आता है ऑनलाइन क्लास में? ओके, सो टेकिंग अ लीव, क्योंकि ये क्लास कभी भी खत्म हो सकती है. लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग. सो हैव अ ग्रेट डे. गुड डे. बाय बाय एवरीवन. हाँ, पेपर चेक हो गया है. नंबर्स मिलेंगे जल्दी आपको. ओके, गुड डे. प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. यस अंशिका, आई विल बी शेयरिंग.